सुपरवाइज और अनसुपरवाइज रहती है। तो मशीन को ट्रेन करने के लिए हम डाटा को लेते हैं और डाटा की इनपुट करते हैं, तो उसमें स्टैट मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिकॉज लार्ज डाटा है तो लार्ज डाटा से रिलेटेड हमारे पास क्या है, वेरियस मैथमेटिकल टूल्स होने चाहिए जिसकी हेल्प से हम उसको कर पाए। सो कल हमने मीन मोड मीडियन किया था, आज अंडरस्टैंड करते हैं कि मीन जो सेंटर डेटा सफिशिएंट नहीं है, आपको लाइब्रेरी को यूज करना है, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो वो सफिशिएंट नहीं है। हम प्रैक्टिकली एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे वो सफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए हम डिस्पर्शन को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पर्शन होती क्या है इसको जानेंगे। ओके, रेंज क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और कोरिलेशन क्या है। यदि हम सेंटर टेंडेंसी को निकाल लेते हैं तो साथ में वो सफिशिएंट नहीं है, इन टर्म्स को जानना, इसका यूज कहां पे होगा, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, उसका आइडिया हमें होना चाहिए। डिस्पर्शन क्यों मैटर करता है एमएल में, कि इतना ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी डाटा सेट हमारे पास होता है उसके लिए उसका जो मीन होता है दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर फाइंडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। ऑलरेडी जैसे हमने कल डिस्कस किया था। So the basic idea of NumPy is कि पाइथन में आपने लिस्ट पढ़ी होगी, हमेशा आपने लिस्ट पढ़ी होगी, आपने ट्रिपल पढ़ा होगा। तो लिस्ट में क्या होता है कि आप हर तरह के एलिमेंट्स डाल सकते हो, इंट भी डाल सकते हो, फ्लोट भी डाल सकते हो, कैरेक्टर भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो इन अ लिस्ट। बट देन उससे क्या होता है, दैट डज गिव यू फ्रीडम बट दैट इज नॉट फास्ट। व्हेन यू आर यूजिंग NumPy, तो बैकएंड में क्या हो रहा है, योर पाइथन कोड इज कन्वर्टेड इनटू सी कोड and then that C code is executed. Because C code का execution is much faster than Python का code, therefore NumPy is a faster library. That's why mathematical operations are always done in NumPy. समझिए, आप ये Python पे भी लिख सकते हो, मैं आपको Python का एक कोड लिख देता हूँ। I hope this syntax is known to all of you. मतलब all those values which are given, therefore this is even, this is even, this is even, this is even. So it's 1, इसके indices क्या है, 1, 2, 5, 7. Sorry, 1, 3, 5, 7. So it's 1, 3, 5, 7. Clear? Similarly ये उसपे भी काम करेगा अगर मैं non even लेके चलेगा। I hope it is clear. Any other question या फिर मैं दोबारा explain कर सकता हूँ। Sir, it's sort करना है, that's मतलब not really. So I am here to evaluate about today's session, day number 3. The speakers were Mr. Jasbir Singh sir and Mr. Abdul Rahman sir. So Jasbir Singh sir was there with us and Abdul Rahman sir was on the screen. So there are so many things which we have studied about. Like for example, we have known about standard deviation, mean, then we have correlations, variance and range and so many things. The examples, the PPT's presentations, everything was on the point. And the most important thing about interaction. So both of the teachers were having so good interaction with us. Our doubts were cleared, everything was cleared about assignments and so many things. Now we are talking about the topics which we have covered today in today's session. That was about NumPy, Pandas, the Titanic example that was also good, Rahman sir's session. So both teachers taught us about everything so minimally with minimal examples, real life examples, even the data graphs, the pictorial representation, the examples, everything was good. And there are so many things which we cannot cover by the words, but the desperation, the inspiration which they used to give us, that was so amazing. And thank you so much, and I am so glad that I am being the part of this workshop. Thank you so much. Good afternoon everyone, my name is Sajid Kondal. I am from BCA final year. I am here to give my feedback on the workshop that is ongoing. Today was our third day of the workshop. I am one of few students who are attending this workshop. So first of all, our speakers were Jasbir sir and Abdul Rahman sir. Our first session was taken by Mr. Jasbir sir. He taught us about standard deviation, variance, range, covariance,
So he cleared our doubts, and Abdul Rahman sir taught us about Python libraries like NumPy, Pandas, Matplotlib. So from these topics, I got to learn that how NumPy works, how Pandas works. I simply want to say that these sessions are going great. We are learning many things from them. They are clearing our doubts that are occurring to any student. I simply want to thank them.